Good morning, students. So once again, welcome back in Social Science live class for Standard 8. As all of you knows that we were discussing in our subject Geography, chapter number 5. The name of the chapter is Industry. This chapter we have already started before the commencement of our first online assessment. Okay, and then we have started it again for the last 2 days. So yesterday we were discussing on the establishment of Tata Iron and Steel Industry. In short, it is TISCO. Okay, at which place? Jamshedpur. The original name of a place where the Tatas began the establishment of this iron and steel plant was Sakchi. SAKCHI. ठीक है बेटा? So at Sakchi they have started building up their iron and steel plant. Later on, when that industrial region developed into a big township, it was renamed as Jamshedpur. Okay, so what is the name given to that iron and steel plant? The name given is Jamshedpur. Is it clear, beta? So that we have discussed. Then after the discussion of this one, then we also discussed that what were the reasons or what were the advantages at that particular location of Sakchi, due to which Tatas have established its plant. Okay, so we came across number of reasons. हमने बहुत सारे ऐसे कारण पढ़े, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए जो उस पर्टिकुलर प्लेस पर एडवांटेजियस पोजीशन में थे. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवांटेज, ओके, वी हैड or the Tatas have established the iron and steel plant. So the one thing that we have discussed is what? Ki Sakchi was situated near Kalimati railway station. Kalimati railway station is only 32 kilometers away from Sakchi. The Kalimati railway station was situated on the main railway network of that time. And the railway network is what? The Nagpur Bengal railway line. Okay, so उस जमाने में जो नागपुर बंगाल रेलवे लाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे नेटवर्क माना जाता था. और उस जमाने में रेलवे वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आज भी रेलवे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है. ठीक है. देन the coal mines as well as the iron ore mines are also situated nearby to Sakchi. Then one more ingredient which is required is manganese. Okay, so manganese is also situated nearby. Okay, so because of all these advantages, the Tatas have chosen Sakchi for establishing their iron and steel. Then one more advantage was there with this place, Sakchi, and that is what? It is also situated or it is also nearer to Kolkata. At that time, Kolkata was known as Calcutta. Okay, so Calcutta was one of the biggest market nearby for the products produced in Tata Iron and Steel Company. Okay, and in Calcutta they have also the port facilities. So all the required advantages were available at that location, due to which Tatas have decided to establish their iron and steel plant. ठीक है. So इतना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. ठीक है. Now today we are going to discuss, okay,
a topic, and that is what iron and steel industries as a backbone of industrial development, है ना। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली किस बारे में है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में यदि उस कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है तो उस कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? इट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यानी किसी भी कंट्री में यदि ब्रिटिश नीड आयरन एंड स्टील सर्विस, फिनिश ऑन दिस वेल, ओके। सो किसी भी कंट्री में यदि उस कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें तो किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो इफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वेल डेवलप्ड इन एनी कंट्री, देन the other industries would also develop. Okay, so that is what we are going to discuss in this particular section or topic. Okay, so let us begin the discussion on, okay, so what is being given in our textbook is that the development of the development of iron and steel industry. I am again repeating, the development of iron and steel industry also opened, okay, the development of iron and steel industry also opened the development of iron and steel industry also opened the chances for the development of so the development of iron and steel industry also opened the chances for the development of other industries in India. Okay, what does it mean? There are number of industries. There are number of industries developed in our country. Beta, you need not to write all these things. You are supposed to only understand it. As far as concerned about the notes, question and answer, I will send the notes separately for writing in textbook. ठीक है बेटा, तो ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। लिखने के लिए मैं क्वेश्चन और आंसर नोट्स सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो ओपन द चांसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया में जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई तो एट फर्स्ट टिस्को हैज एस्टैब्लिश्ड द आयरन एंड स्टील प्लांट एट जमशेदपुर। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द इनिशिएटिव फॉर एस्टैब्लिशिंग मोर आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, सो किसी भी कंट्री में, इंडिया का केस तो है ही है, बट इट इज नॉट अ केस फ्रॉम इंडिया बेटा। किसी भी कंट्री में, उस कंट्री में इंडस्ट्रीज को यदि डेवलप होना है तो सबसे पहले उस कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होना जरूरी है?
iron or steel industry. ठीक है? So when iron and steel industry is developed in any country, it would automatically help the development of other industries. Okay? All the industries, okay, all the industries, all the industries are heavily, I am again repeating, all the industries are heavily depend, okay, I am again repeating, all the industries are heavily depend on iron and steel industry. Okay, all the industries are heavily depend on iron and steel industry for establishing or establishing their, okay, I am again repeating, all the industries are heavily depend on iron and steel industry for establishing their basic infrastructure, for establishing their basic infrastructure. Okay. Now, what is the meaning of basic infrastructure? Okay. Now, basic infrastructure basically means for building the plant, for making all the machineries for that particular industry, for making the buildings. Okay, so कोई भी एक प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो मशीन लगती है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करना है, उस प्लांट में रहने वाले लोगों के लिए बिल्डिंग बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. ओके, सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कोई एक प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो मशीन बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, हर एक चीज बनने किससे वाली है. सो फॉर मेकिंग एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बेटा, आयरन एंड स्टील इज रिक्वायर्ड. ओके, व्हाट डज इट मीन्स कि कोई भी इंडस्ट्री होगी, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ठीक है, और या इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, तो भी उस सारी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे मशीनरी बनानी हो, बिल्डिंग बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रेलवे नेटवर्क चाहिए, एवरीथिंग कुड बी एस्टैब्लिश ओनली विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये सब कुछ बनना किससे है, बनेगा किससे? इट कुड ओनली बी established with the help of iron and steel industry. Got it, beta? So that is what the importance of iron and steel industry. Okay. Now, in case of the Indian industries, okay. So in India, we have big iron and steel plants. Okay, in India we have big iron and steel plants. Okay, which purify the iron ore and produce
मीडियम एंड mini steel plants, medium and mini steel plants. I am again repeating, medium and mini steel plants use this steel to prepare specific products, Okay, so what does it actually mean? As on today's date, यानी आज के तारीख में, sir, in today's time, which has big production of iron and steel? Tisco only? No, beta. As on today's date, in terms of production, ठीक है, प्रोडक्शन के टर्म्स में it is not the Tisco which is the largest producer of iron and steel, it is the VIII steel plant, ठीक है. The VIII steel plant is controlled and run by the government of India. Okay, so in terms of production of iron and steel, it is the Tisco, not the Tisco, it is the VIII iron and steel plant. Okay, well, so in India we have big iron and steel plants which purify the iron ore and produce steel. ठीक है, इंडिया में, हमारे कंट्री में, we have the big size iron and steel plant. Okay, and what is the main task of this big iron and steel plant? These big iron and steel plant do the iron smelting. ये जो बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट हैं, इनका मेन काम क्या है? आयरन स्मेल्टिंग का. ओके, आयरन स्मेल्टिंग मीन्स दे प्यूरिफाई द आयरन ओर. ये जो बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं, इनका मेन काम क्या है? आयरन ओर को प्यूरिफाई करना. और आयरन ओर को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आयरन स्मेल्टिंग. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? आयरन स्मेल्टिंग कहेंगे. ठीक है, अब आयरन स्मेल्टिंग होने के बाद में एक बहुत बड़ा सा आयरन की रॉड बनती है. ठीक है, एंड दैट आयरन रॉड इज कॉल्ड एज व्हाट? आयरन और स्टील इंगॉट्स. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आयरन और स्टील इंगॉट्स. गॉट इट? ये जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, इनका काम सिर्फ कितना है? प्यूरिफाइंग द आयरन ओर एंड प्रोड्यूस स्टील. ठीक है, तो वो जो आयरन ओर या स्टील प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाट? आयरन और स्टील इंगॉट्स. ठीक है, अब वो जो आयरन और स्टील इंगॉट्स होता है, वो इतना मोटा लंबा सा आयरन का पीस होता है. ठीक है, यानी इतना भारी होता है कि उसको प्रैक्टिकली हम कहीं भी यूज नहीं करते. ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? ये जो आयरन और स्टील इंगॉट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, ध्यान से, ये जो आयरन या स्टील के इंगॉट्स कौन से? बिग आयरन और स्टील प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. इस स्टील इंगॉट्स को, ये जो स्टील का इंगॉट्स है, वो कौन खरीदेगा? इट इज बीइंग परचेज्ड बाय द मीडियम एंड मिनी स्टील प्लांट्स. जो मीडियम और मिनी स्टील प्लांट्स हैं, वो क्या खरीदते हैं? स्टील इंगॉट्स खरीदेंगे. ठीक है, यानी उन्होंने स्टील इंगॉट्स को क्या कर लिया? खरीद लिया. अब वो जो स्टील इंगॉट्स इन आयरन और स्टील प्लांट्स ने खरीदा है, ठीक है, इसको ये मीडियम और मिनी स्टील प्लांट्स क्या करेंगे? फिर से मेल्ट करेंगे.
मेल्ट मतलब पिघलाएंगे, ठीक है। और पिघलाने के बाद में फिर जिस प्रकार का आयरन और स्टील का प्रोडक्ट चाहिए वैसा आयरन या स्टील प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो मोल्ड करके बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, जब घर मकान वगैरह बनता है तो मकान की सीलिंग डाली जाती है, छत डालते हैं ना, तो छत डालने के लिए लोहे की एक रॉड होती है, ठीक है। वो जो लोहे की रॉड है वो इस बड़े बड़े आयरन स्टील प्लांट में नहीं बनेगी, वो कहाँ बनती है, इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन दीज मीडियम और मिनी स्टील प्लांट। ये जो मीडियम और मिनी स्टील प्लांट है, व्हाट आर दे डूइंग, they purchase the steel ingots from the big iron and steel plant. They again do, okay, the melting of these steel ingots and convert them into the product which could be practically used, ठीक है। तो जो बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयरन और स्टील इनगॉट्स, और वो आयरन और स्टील इनगॉट्स इतने भारी और इतने मोटे होते हैं कि उनका कहीं पर कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। तो पहले उसको प्यूरिफाई कर दिया, वो प्यूरिफाइड इनगॉट्स मीडियम और मिनी स्टील प्लांट खरीदेंगे, उसको दोबारा मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद में जिस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए उसमें कन्वर्ट करेंगे, ओके, सो दैट दैट प्रोडक्ट कुड बी प्रैक्टिकली यूज्ड, ओके, in different fields, okay. It also included the secondary producers, rolling mills and ancillary industries, okay. So जो iron और steel industries हैं, it is also connected with the other smaller industries, and because of that iron and steel industry is considered as the backbone of industrial development, ठीक है। किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्टेनली किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। गॉट इट बेटा? सो दैट इज व्हाट द पर्टिकुलर टॉपिक इज ओवर, ओके। नाउ एज फार एज कंसर्न अबाउट आवर सिलेबस, ओके, एज यू कैन सी we have been given with one more example, okay, of the iron and steel industry from another part of the world, okay. So in this section of iron and steel industry we have discussed, okay, one of the major iron and steel producing center in our country. So we discuss about which Jamshedpur, ठीक है। सो हर एक इंडस्ट्री के केस में हमें पहले तो उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने को मिलेंगे, देन वी विल हैव द एग्जांपल ऑफ टू मेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ दैट इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के दो प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वन प्रोडक्शन सेंटर इज फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड is from other part of the world, okay. So in case of iron and steel industry, in case of iron and steel industry हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, जमशेदपुर के बारे में। तो जमशेदपुर is one of the important center of production of iron and steel in India, ठीक है। Now same we are going to discuss about Pittsburgh, okay. So this is what given in our syllabus, okay. What is the name of the city beta? Pittsburgh, P-I-T-T-S, okay, B-U-R-G-H. Now Pittsburgh is one of the most important place for the production of iron and steel in United States of America, ठीक है। जैसे इंडिया में, है ना, हम हिंदुस्तान की बात करें तो आज के तारीख में, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट
आयरन और स्टील प्रोडक्शन सेंटर हमारे यहाँ कौन सा है बेटा? भिलाई है। देन वी हैव दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, है ना? ये बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट के सेंटर हैं। तो इन सेम केस, in case of United States of America, which is the important center or which is the important city of iron and steel production, it is which city beta? Pittsburgh. Okay, so let us discuss about the city Pittsburgh. Got it? So it is an important Pittsburgh is an important city. Pittsburgh is an important city or center. Okay, for the, I am again repeating, Pittsburgh is an important city or center for the production of, Pittsburgh is an important city or center for the production of iron and steel, for the production of iron and steel in India, sorry, in USA. ठीक है? So Pittsburgh is an important city or center for the production of iron and steel in USA. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, सिटी है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। ओके बेटा, बेटा as far as concerned about buffering, okay, it is not an issue from my side, because when I go to my system, okay, the net connectivity is quite fast. So if you are facing the problem of buffering, it is from your network side, okay, not from our side. So, well, actually today we are able to work out up to this much time. The reason is the next teacher is about to begin his class and he required more than 5 to 10 minutes for doing the setup. Okay, so beta, tomorrow instead of 10:15, I am again repeating, tomorrow instead of 10:15, we'll start our class 10 minutes earlier. Okay, so all of you please be ready exact by 10 o'clock, okay, for the class, so that we would be able to conduct the class for around 40 minutes. Okay, so that's all for today's class. Okay, so rest of the things we'll continue to discuss in the coming classes. Okay, so that's all for today. Thank you, students. Once again, good morning, goodbye. Thanks.